So good evening everyone. My name is Maurya Hanspal, and in this session we're going to continue our previous session on the topic of time value of money. So in the previous session in which we started the concept of time value of money, we started why time value of money is so important. We talked about the practical concepts of time value of money, that where the time value of money has been more important in the present day scenario, and it was also applicable to the previous day scenarios as well and would be applicable in the future as well. The main reason which I talked about of the time value of money, the major and the most important fact, while people take into consideration the concept of time value of money, is the concept of inflation, which is nothing but the periodic rise in the price of the commodities, or in the other way, we can say the losing of the purchasing power of the money that we have. And we also talked about why the bank charges us a certain amount of rate of interest for the loan that we take. For that, we understood the 3 points. The first point was the credit risk. The second point was the opportunity cost, कि क्या पता बैंक वो पैसा कहीं और लगा लेता. And the third point, we try to understand the concept of time value of money. Because bank has to recover a certain amount in a periodic manner so that the bank can have all that amount which the bank has given as loan, taking into consideration the impact of inflation as well. Because अगर आज 2 लाख का लोन बैंक दे रहा है and the bank has said me to return that loan after 5 years, the value won't be like 2 lakh rupees. Because of inflation, the value would have 5 lakh or 6 lakhs. Okay. So accordingly, apart from the principal amount, the bank also charges the interest amount to at least make it equivalent to inflation, right? So these things we try to understand. Then we also talked about the concept of simple interest, like which is quite simple and quite easy to understand because the concept of simple interest has been taught to anyone, be it you are a commerce student, a finance student, or not. Because even till classes 8th, ninth, and 10th, we learn the concept of like simple interest, right? In that, we talked about the formula and we solved like one question as well. And we took into consideration the principal, the rate of interest, and the time. And later, we also talked about the compound interest and how is compound interest different from the concept of simple interest. Okay. And further, we also took in like various scenarios of compound interest because interest can be compounded annually, it can be compounded semi annually, even quarterly, even monthly, even weekly, daily, or yearly. So, all these kinds of concepts we try to understand, and all the questions are asked basically from all those formulas. So, basically, the formula was just one. So, we were just deriving the formula just by dividing the rate of interest and multiplying the value of time at the top. So, all of those who still have confusion that what I am talking about of the different formulas of compound interest, so don't worry. The formula is just the one that we used to study at the time of a class 11th, 12th, or BBAs or BComs or MBAs, just for calculating for the purpose of the change of time period. That is from annually to semi annually or quarterly. We're just dividing the rate of interest and multiplying the time. And all this was taught in the previous session on time value of money. So you people can go back and watch the recording for that on YT Live. Okay, so that recording is available for all of you. So in this session, we're gonna continue with some of the questions. I'll just take like one or two practical questions for you people to understand how exactly we solve the problems of compounding. Okay. So just for example, if the question comes and if someone says you that the principal amount or the amount that you have invested in the stock market, because stock market works on the principle of compounding, and how stock market works on the principle of compounding, this we have talked about in the previous session only. Okay, so just imagine, just for the sake of simplicity and better calculations, let's take you invested in the market a sum of 100 rupees. Okay, and you believe that the expected rate of interest that you're gonna get on that 100 rupees, matlab expected rate of return in case you have invested, and in the other case if you have taken a loan, so that would be the expected rate of interest that you have to pay. So one more thing to be noted, you might have a confusion that when we take a loan for something, be it a personal loan, a car loan, or any other kind of loan, is that one a simple interest or a compounded interest?
In 99.9% of the cases, the loan that you take from banks would be simple interest only. If you people would have taken compounded interest, then you would have paid 100 times more interest than the principal amount, and that is completely infeasible. Okay, so you are paying like simple interest upon that, though still the amount of simple interest, it tends to be more than the principal amount if you are paying the loan in a delayed time period. मतलब जितना लेट तुम अपना लोन पे ऑफ करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा. And why? Because of time value of money. Okay, so just think we invested 100 rupees in the market, and the amount that we are expecting, the rate of return that we are expecting, which is always an expected rate of return that we take, be it any scenario, because no one can predict the final rate of return, which can be different as per the market conditions. Okay, so this rate is the expected rate of return which you people would get in your question. So the expected rate of return, just assume it is 12%, and we have invested this 100 rupees in the market for a period of 5 years. And now if someone says you calculate the compounded interest, so compounded interest, or basically we can also call it as the future value. Compounded interest is same as the future value. Okay, the same thing that you do. Compounded interest is same as the concept of future value. Okay, so what do we do? The formula, and this is compounded annually. मतलब साल में बस एक ही बारी like हमको रिटर्न मिल रहा है. Okay, P into 1 plus R to the power of N. Okay, we took the formula, which implies 100 into 1 plus 12% को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 0.12, पीरियड हमारा 5 है, एंड सिंस इट इज एनुअली तो इट इज 1. ठीक है, ये 0.1 भी डिवाइड लाइक 1 से हो रहा है, एंड 5 into 1 हो रहा है बिकॉज इट इज एनुअली. ओके, सो व्हेन वी सॉल्व इट, इट कम्स आउट टू बी 1.12 की पावर ऑफ 5, which is 1.76 into 100. Okay, and I'm all doing it in front of you, okay, so that it can be like more manual and friendly with all of you. Okay, so let's solve it all together in this live session and do it manually so that it is more easier for the people to understand, instead of me like framing the question before and giving you the final answer. So this was nothing but 100. This was 1.12 की power 5, and this you can easily calculate by using a scientific calculator. Okay, and use a scientific calculator. It looks like this. Okay, so for that purpose, using a scientific calculator will enable your calculation purposes in a faster way. And scientific calculator, all the people who are studying BBA or BCom or MBAs, all these calculators are legal, and your faculties and college, they recommend you to buy a scientific calculator once you have joined your BBA, BCom or MBA lessons. Okay, and you are allowed like basically to like use such kind of calculators, तो इसके टेंशन मत लेना. Similarly, if in the question they had said interest is compounded semi annually, तो तुम क्या करते, अपना P तो सेम रहता. अब सेमी एनुअली है तो इट वुड बी 0.12 डिवाइडेड बाय 2. बस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड हो रहा है, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा. तुम बस 0.12 को 2 से डिवाइड कर रहे हो. 1 प्लस 0.12 को तुम 2 से डिवाइड नहीं कर रहे, बट जस्ट डिवाइडिंग दिस to the power of 5 तो रहना है into 2 because it is semi-annually. Similarly, if in the question it had been quarterly, 1 plus सिर्फ 0.12 को तुम 4 से डिवाइड कर रहे हो, 5 भी सेम रहना है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, right? Similarly, if in the question it had been you are doing it monthly, 100 तो सेम ही रहना है, 1 भी सेम ही रहना है, प्लस 0.12 मंथली है तो 12 से डिवाइड करा, पावर 5 की है उसको इंटू 12 कर दिया. ओके, सो दिस इज व्हाट जस्ट जिस अमाउंट से यू आर डिवाइडिंग, यू आर मल्टीप्लाइंग विद द सेम नंबर. ओके, सो लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट एंड लेट्स टेक मोर सिनारियोस. ओके, हाँ, राइट. सो इफ इन द क्वेश्चन दे हैड सेड यू डू इट फॉर वीकली, 100 सेम रहना है, 1 प्लस ये 12 भी सेम रहना है, वीकली है तो डिवाइड बाय 52, राइट? ऊपर 5 भी सेम रहना है इंटू 52. व्हेन इट सेज इट इज डेली, डेली में यू हैव हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? यू हैव 365 डेज.
0.12 सेम रहना है, यहाँ पे मैं 0.12 कर देता हूँ ताकि यू पीपल डोंट हैव कंफ्यूजन. डिवाइड बाय 365. बस इसी टर्म को वी आर डिवाइडिंग बिकॉज a lot of people make the mistake, they tend to divide this whole term, but you are not dividing this whole term. पावर 5 की रहनी है इंटू 365. तो जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो तुम उसी से मल्टीप्लाई करो. एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैनुअली यू हैव अ बेटर ऑप्शन, यूज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर. कैलकुलेशन सब झटके में हो जानी है. Because once you reach a professional level in finance, okay, you have to use scientific calculators or Excel. Okay, so even on Excel, you people can calculate these values. For that, I'll be keeping a separate session like sometime in future. But these values can also be calculated on Excel also in a quick way. So like separate sessions would be Excel, like would be kept by me only for all these calculations because we have a lot of financial functions which you people can solve in Excel. So that's gonna be a very interesting session. So that we're gonna do like sometime later. Okay. So abhi ke liye, to have the basic understanding, it is preferred to do it manually first. Okay. So this is how we calculated the future value. ठीक है. अब इस future value में they can give you anything. हो सकता है they have given you the future value in the question. They have given you the rate of interest. They have given you the time, and you have to calculate P. हो सकता है क्वेश्चन में सब कुछ दिया हो बट आर ना दिया हो सकता है क्वेश्चन में सब कुछ दिया हो बट एन ना दिया हो. ओके, इट कैन हैपन दैट योर फ्यूचर वैल्यू has been given like 200 has been given, your principal is given as 100 rupees in the question, 1 plus r is not given, r you have to find out and time is given. तो अगर तुम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे सो इट कैन बी अ टीडियस टास्क. तुम 100 को यहाँ ले जाओगे, जब 200 by 100 होगा ये हो जाएगा 2 is equal to 1 plus r. तो these are just some random numbers like which I am taking. अब r कैसे निकालोगे, and that can be a great problem. ठीक है, in that case see it is not a mathematics class. First of all, it is a financial management class, and when you people tend to do these questions now, either you people do it on Excel, and the people who are doing it in the real world scenario, they are using Excel only because manually like no one would be able to solve it. देखो 2 is equal to 1 plus r आ रहा है, ठीक है, to the power of 20. In order to solve it, you need to be a brilliant student in maths. ठीक है, because here जो like those people who had taken maths in class 11th and 12th, they understand the concept of log, right? And especially the people who were the science students and who have shifted their stream to commerce, they understand the concept of log. Okay, so these things are solved with the help of log only. Without log you cannot solve it. ठीक है, अब तुम वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, सिंपल एक्स वाई जेड की तो लाइक इक्वेशन तो है नहीं, राइट? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू. अब अगर तुम मैथमेटिकली चलो, दो इट्स नॉट अ मैथ्स क्लास, यू हैव टू अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स. So that would be like log 2 into log 1 plus r की power 20. And अब log 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? For that you have the scientific calculator. You have a function of log. Like if you look at my scientific calculator, you have a function of log here. That log function is there. So if you click on log, I clicked on log. Like if it is visible on the YT live session, I clicked on log. Then log के आगे मैंने लगाया 2. 2 आगे लगाया, then is equal to. तो log 2 की वैल्यू आ रही है 0.3. ठीक है, तो डायरेक्टली बिना कुछ कैलकुलेट करे लाइक 0.3, बिकॉज अगर फिर इसकी वैल्यू निकालनी है यू नीड टू बी मोर गुड इन मैथ्स. फिर यहाँ पे तुम बेसिस लोगे. ठीक है, सो लाइक दैट इज समथिंग डिफरेंट, एंड हियर यू पीपल आर लाइक नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एग्जाम. ओके, एंड वी आर हियर टू बी लाइक बेटर इन FM. अगेन अब इसकी भी लाइक प्रॉपर्टी यू शुड नो. अगर लॉग लाइक इसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड पावर ऊपर है तो वो 20 लॉग हो जाता है एंड ये लाइक 1 प्लस r हो जाती है. फर्दर दिस वैल्यू विल गो ऑन हेयर. ठीक है, तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो बेटर है यूज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर ऑल दी पर्पसेस और डायरेक्टली यूज एक्सेल. फॉर दैट पर्पसेस योर कैलकुलेशन वुड बी टू इजी. ठीक है, सो दैट यू पीपल नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग. Yeah. Then what do we have next? इसी फॉर्मूला से जो हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, we had the principal into 1 plus r to the power of time, which is n, right?
डोंट यू थिंक ये प्रिंसिपल का अमाउंट वो है जो आज हमारे पास है, आज हमारे पास जो है, इट कैन बी द अमाउंट फॉर विच वी आर टेकिंग लोन, it can be the amount which we are investing in market to get an expected return in future. Can't we call it as the present value, PV? Because जो present हमारे पास है, that is the present value only. And जो चीज आज हमारे पास है, अगर आज मैंने मार्केट में 100 रुपए लगाए हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एट अ सर्टन रिटर्न उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, बिकॉज मैं चाहूंगा वो 100 का 200 बने, 500 बने, 5 लाख बने, 5 करोड़ बने, ठीक है। एंड इसी वैल्यू जो मेरे पास अभी है, I'm trying to find the future value for that, right? So again, what happens in some question, they ask you to calculate the future value. In some question, they ask you to calculate the present value. So the formula of the present value can be derived from this formula only. लोग याद करने की कोशिश करते हैं, नीड ही नहीं है, सिंपल मैथ्स। तो पीवी क्या हो जाएगा, इट विल बी एफ वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एन, जस्ट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें लाइक फ्यूचर वैल्यू दी होगी, तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होगा, एंड आर दिया होगा, एंड एन दिया होगा, दे विल से टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अब ये प्रिंसिपल हो चाहे प्रेजेंट वैल्यू, बात एक ही है, बट वी हैव जस्ट रीनेम्ड दैट प्रिंसिपल इनटू द प्रेजेंट वैल्यू, राइट। एंड दिस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर वैल्यू वी कॉल्ड इट एज कंपाउंडिंग, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग, उल्टा। कंपाउंडिंग का उल्टा इज डिस्काउंटिंग, एंड डिस्काउंटिंग का उल्टा इज कंपाउंडिंग, ठीक है। सो लाइक दिस प्रोसेस, जब तुम आगे की वैल्यू निकालने का सोच रहे हो, दैट प्रोसेस इज कंपाउंडिंग। जब तुम्हारे पास फ्यूचर वैल्यू है, मान लो मेरे 100 रुपए के 5000 रुपीज हो गए, ठीक है। एंड 5 साल बाद मैं देखा, अरे 100 के ये 5 लाख बन गए, चलो ठीक है, ये 5 लाख बन गए। एंड जब मेरे पास 5 लाख आ गए, और अब मुझे 5 लाख बाद वाले स्टेज में हूं, मान लो कि 2022 में आई इन्वेस्टेड 100 रुपीज इन मार्केट, एंड दिस इज द पीवी। आफ्टर 5 years in 2027 आई सी माई दिस अमाउंट हैज टर्न टू 5 लाख। तो अब मैं लाइक मान के चलो कि मैं 2027 में हूं, अपना देखा, मैंने बोला मुझे 5 लाख मिल गए। अब 5 लाख जो मेरे पास आज इन 2027 है, अगर मुझको जानना है एंड मुझको याद नहीं है कि मैंने 5 साल पहले मतलब 2022 में कितना इन्वेस्ट करा था कि मेरे आज 5 लाख हो गए हैं, या स्टिल आई वांट टू मेक रिकमेंडेशन टू समवन कि मुझे इतना मैंने पैसा अपना लगाया था, इतना मुझको रेट ऑफ रिटर्न मिला, एंड आज 5 लाख हो गए, राइट। तो उसके लिए इफ आई वांट टू नो कि हाउ मच आई इन्वेस्टेड 5 years बैक, तो उसके लिए आई यूज लाइक दिस फॉर्मूला। हम जा रहे हैं पीछे, इन द पास्ट, उल्टा, ओके। एंड अगेन इट इज फॉर द एनुअल। तुम्हारा सेमी एनुअल होगा तो डिवाइड बाय 2 इंटू 2, क्वार्टरली होगा तो डिवाइड बाय 4 इंटू 4, मंथली होगा डिवाइड बाय 12 इंटू 12, वीकली 52 डेली 365, राइट। तो आर और एन में वो मॉडिफिकेशन चलती रहेंगी, राइट। तो अगर मान के चलो तुम्हें लाइक क्वेश्चन में दिया है, वो बोल रहा है कि फ्यूचर वैल्यू जो है वो 5000 रुपीज बन गई है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 10%, एंड 12 साल के टाइम में बना, एन एस 12 साल, एंड इट इज एनुअली। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, बेसिक फॉर्मूला, 5000 रुपीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 to the power of 12, and then you manually do it, 1.10 to the power of 12, it comes out to be 3.13। 5000 को डिवाइड करोगे 3.13 से, you'll get 1597। तो मैंने इतना अमाउंट लाइक 12 साल पहले किया था इन्वेस्ट, एंड आई गॉट दिस अमाउंट, ओके। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में दिया होता कि सेमी एनुअली, तो इंटू टू कर देते, एंड सेम गोज फॉर क्वार्टरली एंड ऑल। सेम चीज तुमको हो सकता है कि सारी वैल्यूज दी हो, कैलकुलेट आर टी, तो फॉर दैट either you should be like perfect in maths, ठीक है, and do all the hard work, or you should be smart enough either to have a scientific calculator or use Excel, that's it, ठीक है। Whew. Yeah, so that is one thing।
for all this? And let's erase it. हाँ, yeah. एक कॉन्सेप्ट टच करते हैं in this class. I will try to solve the numericals for this in the next subsequent sessions. Okay. Annuity. एक चीज होती है annuity. Let's take a simple example. देखो. First of all, I'll tell you the meaning of annuity in terms of finance. Then I'll try to relate this with a common example. Annuity is something जो हमको like periodic payment मिल रही हो, ठीक है? It is something हमको like periodic payment किसी time पर मिल रही है, right? We are getting a systematic payment or a periodic payment either monthly or quarterly or annually, right? अब वो पैसा हमको क्यों मिल रहा है? अब ऐसा तो है नहीं ना कि एक सर्टन एज में हम आ गए and at that time like we are just getting that money from random sources. If you want to get this money, obviously when you were young at a time, you would have invested in a certain fund, a certain scheme which is now giving you a periodic return. You might have seen this in the case of provident fund or pensions. जो भी घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, when they retire at the age of 60 or 65, वो बोलते हैं कि हमारी मंथली पेंशन आती है. We get a monthly pension. And all of the people who are here, those young people might have heard their elders, their grandparents and all. They say कि monthly pension आती है. अब monthly pension कैसे आती है? अब हवा से तो आ नहीं जाएगी. When those people were young, when those people were working, when those people were getting their salary, they were investing a certain amount in a fund. It can be a pension fund, or it can be a PPF, which is nothing but the public provident fund. ये कंपनीज अकाउंट खुलवाती हैं. For that your salary must be at least less than or equal to like 15,000 per month कोई earn कर रहा हो, and number of employees कंपनी में like 20 से ज्यादा हो. So in this case the company has to mandatorily open a public provident fund account. Employment के टर्म में we call it as EPF, which is the employee provident fund. अगर employer नहीं खुलवा रहा है, ठीक है, बिकॉज अगर ये कंडीशन नहीं है कंपनी की, ठीक है, तो लाइक इट इज नॉट मैंडेटरी, तो तुम बाहर गवर्नमेंट के थ्रू खुलवा सकते हो. अगर तुम गवर्नमेंट के थ्रू खुलवा रहे हो तो इट इज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड. अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारी कंपनी तुम्हारी कंपनी तुम्हारे लिए खुलवा रही है, दैट इज एन एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड. बट जो पर्पस है वो एक ही रहता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहता है. तो इन केस ऑफ ईपीएफ लाइक 12% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय यू, मतलब कि 12% ऑफ 15,000 या तुम्हारी जितनी भी सैलरी होगी, मतलब कि लेस देन 15,000, एंड 12% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय योर एम्प्लॉयर. बट एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स लाइक 1% एक्स्ट्रा. ओके, दैट 1% एक्स्ट्रा तुम्हारा क्या होता है? मान लो कि पीपीएफ में लाइक 12% की कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 12% तुम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 12% तुम्हारा लाइक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. बट एम्प्लॉयर तुम्हारा लाइक 1% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इन टर्म्स ऑफ लाइक एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, एंड दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, मतलब कि 0.5% गोज फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एंड 0.5% गोज फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, कि तुम्हारे पैसे सेव रहे. तो द एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग लाइक 1% मोर देन यू. बाकी ये 12% गेट्स डिवाइडेड इनटू द पेंशन एंड ईपीएफ. पेंशन में लाइक 8.67% चला जाता है एंड बचा हुआ 3.63% इट गोज ऑफ इन योर प्रोविडेंट फंड. सो दैट इज समथिंग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट. बट व्हाट डिड अ ग्रैंड पेरेंट्स डू? उनका कुछ सैलरी का अमाउंट लाइक इन फंड्स में जाता था, so that when they get retired they can get a periodic payment year after year, and they do not have to depend on their young ones or like anyone else for money. So same thing happens in annuity. You are trying to deposit a certain amount every month, ठीक है? तुम कुछ पैसा मान लो कि 100 रुपए या 500 रुपए यू आर इन्वेस्टिंग एनीवेयर, बी इट अ पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड और अ म्यूचुअल फंड और एनी अदर फंड विच कैन गिव यू अ रिटर्न, एंड तुम मंथली उसमें तुम इन्वेस्ट करते हो फॉर अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? एंड तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा कोई गोल हो,
तुम्हें like 10 साल बाद like you need like 1 crore rupees. So for that you need to know how much you have to invest right now monthly to get like 1 crore rupees. It can be termed as synonymous with SIPs or systematic investment plans बोल सकते हैं, ठीक है, बट एनुइटी को थोड़ा इनसे लाइक डिफरेंट रखो तो बेटर है, बिकॉज वो ज्यादा अपने पेंशन फंड्स या पीपीएफ के केस में ज्यादा प्रेवलेंट है. बट एनुइटी को समझने के लिए इट इज बेसिकली तुम पीरियोडिक पेमेंट्स कर रहे हो in order to get a certain amount in future. But when you people were calculating the future value or the present value, वहां पर तुम periodic payment नहीं कर रहे थे, वहां पे एक lump sum दिया and future का return आ गया. But in case of annuity, how it is different from future value or the present value, in annuity you are doing certain fixed payments, either monthly or quarterly or yearly. एक fixed payment जा रही है, but पीवी एंड एफपी के केस में नहीं होता. उसमें यह है कि पैसा डाल दिया तो डाल दिया एक बारी में. इसमें तुम बार बार डालते हो एवरी मंथ. either like you people can put that amount on the first of every month, 1st January, 1st Feb, 1st March, or 31st of January, 28th of February, 31st March, up to a certain time limit to get a return. And that is the basic difference between annuity and the formula that we did for the future value. अब annuity के कितने types होते हैं, how to solve the problems of annuity, so that we'll do in the next session. Okay, so that is all for today, talking about the time value of money, these annuities, and solving questions on compounding and present value. Okay, so see you